Welcome to Sahitya Academy's Webline Literature series. Today program is Poets Meet under Ek Bharat, Shreshtha Bharat. In today's Poets Meet, Sri D.G. Kale, Srimati Andal Priyadarshini, Mrs. Anjali Damal, and Sri Amuda Bharati will going to recite their poems in Marathi and Tamil respectively. On behalf of Sahitya Academy, I welcome to all sir and madam for this program and accepting our invitation and participating in this Poets Meet. I also welcome to literary viewers who are watching this program in Sahitya Academy media channels. In this program, first Sri D.G. Kale sir will going to recite his poems in Marathi and its translation. Sri D.G. Kale is a Marathi poet, critic, and magazine editor. He has more than 6 books to his credit. He has been honored with the many literary awards such as Maharashtra Sahitya Samskruti Mandal Y.B. Chauhan Prize, Professor R.B. Patankar Criticism Puraskar, Grace Smriti Puraskar, Yashwant Manohar Pratithan Puraskar, and Manorama Pratithan Puraskar, etc. Now I request you to Sri D.G. Kale sir, kindly recite your poems. Sir, unmute. Please unmute your audio. Sir, you are in mute, sir. Kindly unmute audio. ओके Okay, sir. सुप्रभात. मैं दागो काळे, मराठी पोएट, साहित्य अकादमी की ओर से भारत के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत यह वेब सीरीज में कविता पाठ करने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं रंगनाथ जी पठारे और मित्र श्री टी.एस. चंद्रशेखर राजू जी को धन्यवाद देता हूँ. यहाँ उपस्थित कविता पाठ करने वाले सहकारी कवयित्री कवि मित्र इनको शुभेच्छा और अभिनंदन करता हूँ. मेरे कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप चौहान इनका आभार प्रकट करता हूँ. मैं पहले मेरे कविता का मराठी पाठ करूंगा, बाद में इसी कविताओं को अंग्रेजी अनुवादित पाठ प्रस्तुत करूंगा. मेरी पहली कविता है भाषेचं विवर. अस्तित्वाच्या चंदनबनी गोष्टीचे जटिल संदर्भ आयुष्याच्या ऐन संध्याकाळी डोळ्यात येतात आणि अचानक निघतो माझ्यातून एक अंधारक्षयी कवळसा, अंधारातून अज्ञाताच्या वाटेवरून जाणारा आलो. या मार्गाच्या मागामागाने मला शोधायचे आहेत काही स्वप्नांचे अगम्य प्रदेश. उदाहरणार्थ येथून लुप्त झालेल्या भयभीत भाषेचे विलाप, उदाहरणार्थ येथून लुप्त झालेल्या भयभीत भाषांचे विलाप आणि स्वर्गवासी वृद्धांच्या कंठातील करुणा. आणायचे आहेत पुन्हा 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 व्यक्त होण्यासाठी मृतप्राय भाषेचे अवशेष. पुन्हा व्यक्त होण्यासाठी मृतप्राय भाषेचे अवशेष. शोधायचे आहे मला शोधायचं भाषेचं विवर. शोधायचं आहे मला शोधायचं भाषेचं विवर, अगम्य अव्यक्ततेने भारलेलं अनंत काळापासून आणि येथील दुःखाचं निराकरण करणाऱ्या लिपीचं माध्यम. इस कविता का
अंग्रेजी अनुवाद मैं पढ़ूंगा, जो ट्रांसलेट किया है डॉक्टर प्रोफेसर दिलीप चौहान, नांदेड़। द डार्क होल ऑफ लैंग्वेज, complex containers of the stories of pregnant life appear in eyes in the evening, and suddenly emerges from me a dark beam of light which walks the untrodden, unknown dark path. While treading this path, I have to explore some mysterious land of dream. For example, Welling's The Lost Languages and Pity in the old left for the heaven. I have to bring back release of dead languages for re-expression again. I have to dig now the dark hole of language so loaded with mysterious silence from the antiquity, and also to search the medium of script. मैं दूसरे मराठी कविता का पाठ करूंगा। बाया बाया एकट्या चालायला धजत नाहीत, बाया एकट्या चालायला धजत नाहीत, चढत नाहीत दुस्तर घाट. घोडक्या घोडक्यानं चालताना होणाऱ्या पावलांचा पायरव उसवत नेत राहतो अव्यक्त विण वेदनेची. तिळातिळानं जमवलेली तहयात संपून जाते मधोमध अनवट वाटेवर, तरी चालणे संपत नाही जन्मोजन्मीचे. काय बोलत असतील बाया एवढ्या तन्मयतेनं, काय बोलत असतील बाया एवढ्या तन्मयतेनं, तळ्याच्या काठी पदराआळून एकमेकींची. हे अनंत काळाचे अबोलपण की अरुण्य हृदय. कोणते बीज अजूनही उगवत राहते त्यांच्या गर्भगृहात, कोणते बीज अजूनही उगवत राहते त्यांच्या गर्भगृहात. त्या बोलतात बोलतच राहतात, त्या बोलतात बोलतच राहतात. आदिम कारुण्याचे स्वर घुमत राहतात सगळ्या अरण्यभर. माणसांची चाऊल लागतात, बुडून जातात तळघरात तळ्याच्या पाण्यात, एखाद्या अंधारातील पडक्या हवेली सारख्या. बाया बुडून गेल्या आहेत काळोखात, निव्वळ काळोख तुडवत तुडवत. बाया का निघाल्या आहेत जंगलाकडे. एक कविता पाठ का इंग्लिश women don't dare climbing up a hilly terrain alone, whispering of the walking feet. Keep unstitching the texture of the unsung pain. All the lifespan gather the meticulously, gather so meticulously, and in the wailing unending way of hillway, through walking emptiness, birth after. While what should women be talking so devoutly and hiding their faces? This age-old silence or deep grief, which seed
when seeds keep growing in their uterine sacs, the sounds of ancient pity keep echoing throughout the forest, like old movements, Haveli in darkness. Women have sunk in the dark. Why have these women moved to the woods, trembling darkness? और एक छोटी कविता है, कमळ कमळ उगवली आहेत बेंबीतून देहाच्या, कमळ उगवली आहेत बेंबीतून देहाच्या, मुलींना कमळ नाहीत आवडत, मुलींना कमळ नाही आवडत, मुली कमळांना पाण्यात पाहतात. Lotuses have sprouted from the umbilicus of body. Girls do not like lotuses. Girls hate lotuses. Thank you very much. Hello. बहुत धन्यवाद सर for your wonderful recitation. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. Now I request Srimati Andal Priyadarshini Amma going to recite our poems. Srimati Andal Priyadarshini is a Tamil poet, novelist, short story writer, and translator. She has more than 45 books to her credit. She has been honored with many literary awards, such as Kavi Chammal Award, Lilly Devi Sikamani Award, State Bank India's Best Writer Award, Tirupur Tamil Sangam Award, Tamil Nadu Government Award for her creative literature as well as her translations, and Kalaimamani Award, etc. Now, I request you, Andal Priyadarshini Amma, may recite her poems in Tamil and their translation in English. Vanakkam. I am very happy to be a part of this today's literary webinar. And today is a blessed day as I happen to listen to the wonderful language of Marathi, the language of Veer Shivaji. So, Sahitya Academy is always a pioneer to say in connecting the hearts of the Indians by way of doing service to the literary hands and literary minds. And I have traveled vast in India through the Sahitya Academy meetings and happened to meet all the good-hearted people from all over the country. And today's topic, Ek Bharat, Shreshtha Bharat, is a wonderful concept. And as I perceive it, I would like to present two poems. One which will tell that our house is always not only our house of the family members, but writers from all over the world also live with us in our house. This is the best way to feel and lead a way of Ek Bharat, Shreshtha Bharat. So the first poem goes like this: Nool Veed, a house of books. Nool Veed, a house of books. எங்களுடையது நூல் வீடு, நூல் இல்லாத இடம் உத்தரம் மட்டுமே. நாற்காலியில் பாரதியார் உட்கார்ந்திருப்பார், சோஃபாவை வள்ளுவர் ஆக்கிரமித்திருப்பார், மீராவும் ஆண்டாளும் புத்தக மேசையில் பல்லாங்குழி ஆடுவார்கள், சங்க கவி முதல் சின்ன கவி வரை வீட்டில் நிறைந்திருப்பர், கமலாதாஸ் சுரையாவும் தஸ்லிமா நஸ்ரீனும் பால்கனியில் சங்கதி கதைப்பர், காளிதாசும் ஷேக்ஸ்பியரும் தாகூரும் ரூமியும் வரவேற்பறையில் வாத்சல்யம் கொடுப்பர், வால்மீகியும் கம்பனும் பூஜை அறையில் புன்னகைப்பர், ஓஷோவும் ஈஷாவும் தியான அறையில் தியானித்திருப்பர், ஹாரி பாட்டர் கட்டிலின் கீழே
சேத்தன் பகத் கட்டிலின் மேலே. எங்களுடையது நூல் வீடு. நூல்களின் வீட்டில் ஒண்டி இருக்கிறோம் நாங்கள். சமூகத்துக்கு ஒரு வேண்டுகோள். நான் இறந்த பின் என்னை தனியே புதைக்க வேண்டாம். நூல்களோடு சேர்த்து புதையுங்கள். நூலின்றி கிடையாது என் இருப்பும் என் இறப்பும். This poem talks about how I live in a house which is called my house, but this is not owned by me. All the writers take a share in my house. So this house is always a house of poets and writers. Nool Veed, house of books and writers. This is how the translation goes. Our house is not our house alone. It's a house of books. We occupy sneaky corners only. Ours is a house of books. Only ceiling has no books. Bharatiyar would occupy the chairs. Valluvar would occupy the sofa. Kalidas and Shakespeare, Tagore and Rumi enjoy the drawing room. Meera and Andal will be chit-chatting on the reading table. Poets of Sangam age and poets of computer age occupy our full house. Kamala Das Suraya and Taslima Nasreen enjoy the balcony breeze. Valmiki and Kamban will be divine in our puja room. Osho and Isha will be performing meditation. Harry Potter is rolling on over the bed. Chetan Bhagat is rolling underneath the bed. Ours is a house of books. We have sneaky corners only for us. I have a request to the society. When I am dead and gone, do not bury me without books. I do not die. I do not live and I do not die without books. I do not live and I do not die without books. I think Ek Bharat, Shreshtha Bharat can be conceived and perceived only through literature and arts. It can unite not only the hearts, but the whole world. Anything under the sun can be united only through arts and literature. That is the meaning of this poem. And the next poem is in Tamil. That also has a message to tell that we have only one sun, one star, one moon, but thousands of stars are there. Similarly, each person has his own way of following the tradition and the religion. So by Ek Bharat and Shreshtha Bharat, we have to march forward to a state where we do not pray to only one God. We can pray to thousands of gods, but we should be united through as one soul. That is the Indian soul. So this poem goes like that. Due to its alliteration and meter in Tamil, it's very hard to translate this poem into English. So I would like to present only the Tamil version of this poem. Hope you will understand and enjoy the meter of it. Adi Bhagavan, Sodi Bhagavan. This means the age-old God is only sun, not anything else. Age-old God is only Mother Earth, not anything else. Other conceptions and perceptions are only our own creations. So we should not be bifurcated and divided by all these small fractions, but only think of the only sun and the only moon. Adi Bhagavan, Sodi Bhagavan. ஆயிரம் கோயில் ஆயிரம் தெய்வம் பாயிரம் பாடி தொழுது வந்தேன். ஆயிரம் உருவம் ஆயிரம் நாமம் கோயிலில் மனதை உழுது வந்தேன். பல யாகம் பல யோகம் சிந்தையில் தெளிவு கிடைக்கவில்லை. பூசைகள் செய்தேன் புண்ணியம் என்றேன் பூரணனை நான் பார்க்கவில்லை. எத்தனை சண்டை எத்தனை பூசல் இறைவன் பெரியவன் இறைவன் பெயரால் தினந்தோறும் இவனே பெரியவன் இவனே சிறியவன் யுத்தங்கள் உண்டு இனந்தோறும். கோயில்கள் எங்கும் தீபம் எரியாமல் தீப்பந்தம் எரியும் நிலை எதற்கு? சோதரர் வடிக்கும் குருதியும் கண்ணீரும் எண்ணெயா எரிந்தால் சிலை எதற்கு? உயிர்ப்பலி உண்டு வன்முறை உண்டு கோயில்கள் என்ன போர்க்களமா? உயிர்ப்பலி உண்டு வன்முறை உண்டு கோயில்கள் என்ன போர்க்களமா? அகிம்சையும் அன்பும் கோயிலில் இல்லை தெய்வங்கள் தீவிரவாதிகளா? இறைவன் எந்த அறையிலும் இல்லை வழிபடும் உருவச் சிறையிலும் இல்லை. இறைவன் என்பவன் இயற்கை வடிவம் உலகம் எல்லாமே அவனின் படிவம். காரிருள் நீக்கும் கதிரவன் தெய்வம் காகம் என்னும் தோட்டியும் தெய்வம். பேரருள் பொரியும் மழையும் தெய்வம் பொய்மை இல்லாத உண்மையே தெய்வம். கள்ளமறியா குழந்தைகள் தெய்வம் உள்ளம் உருக்கும் அமைதியும் தெய்வம். நீயும் தெய்வம் நானும் தெய்வம் வாளை குழைக்கும் நாயும் தெய்வம்.
வெட்ட வெளியில் வீசும் காற்றில் சொட்டும் நிலவின் சுந்தர ஒளியில் ஒற்றை தீபத்தின் ஒளிச்சுடர் அசைவில் எல்லா மதமும் சிரிப்பது தெரியும். எந்த மதமாய் இருப்பினும் என்ன, உருவங்கள் மறப்போம் இறைவன் தெரியும். சின்னங்கள் மறப்போம் சிந்தனை தெளியும். பின்னங்கள் இல்லாத பூரணன் புரியும். பின்னங்கள் இல்லாத பூரணன் புரியும். This poem says that we can perceive the image of God in manhood, even in birds like a crow, even in animals like a dog, even in nature like trees, climbers, everything. So we should not be divided and bifurcated through these small fractions of religion, but be united as one nation like Ek Bharat, Shreshtha Bharat. The soul is important, not the images. This is how it said. Thank you so much for inviting me. Nandri Amma for your wonderful recitations. Now, I request you to Mrs. Anjali Damal Madam going to recite our poems in Marathi as well as English. Mrs. Anjali Damal is a Marathi poet and short story writer. Her poems, short stories, and articles were published in major Marathi literary magazines such as Srujan Milan Saryajani, Akanksha, etc. She is regularly participating in so many poets meet throughout Maharashtra as well as in India also. She has been honored with Maharashtra Government Award for her story writing, Maharashtra Sahitya Parishad and Deccan Maharashtra Sahitya Sabha Award for her poetry collection. Now I request you, Anjali Damal Madam, going to recite her poems. Namaste. I am so thankful to Sahitya Academy for this great opportunity to converse with my brothers and sisters through poems throughout the India. I am so grateful for being a part of this harmonious concert with the great poets from Tamil and Marathi. I am presenting my first poem in Marathi and its translation in English. ही कविता स्थलांतरावरील रूपकात्मक कविता आहे. मानवी इतिहासातील विकासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर माणसाने स्थलांतर केलं आणि त्यापैकी एक अतिशय वेदनादायक स्थलांतर म्हणजे ग्रामीण जीवनाकडून शहरांकडे झालेले स्थलांतर. तर या कवितेचं नाव आहे खरंच पर्याय असतो का. आपली सगळी मुळं स्वतःच उचकटून जन्मापासून सोबत असणारी पोसणारी माती झाडून झटकून झाडं उठून चालली गावागावातून शहराकडच्या डांबर रस्त्यावरून जगण्यासाठी. माती सुटत चालली मुळं किती फरफटली, ओल्या कच्च बहराची पानांची महिरप गळाली. डांबरांची कोरडी धग खोडातून शेंड्याला जाऊन भिडली. पुढं वाढून ठेवलेल्या विकासाची निशाणी अशी वेशीवरच भेटली. झाडं घुसत गेली बिन आवतणाची. डांबरांमधल्या खंदकात जागा सापडल तिथं स्वतःला रोवून घेऊ लागली. जागा नसेल तिथं फांद्यांनी ढकलून मुळांनी सरपटून फटीतनं पसरू लागली. गावाकडचा दुष्काळ नको अंधरणीचा तडकलेला अख्खी झाडच्या झाडं गिळणारा भेगाळ नको. शहरात चिरकी का होईना धार मिळेल. विसाव्याला टेकायला बांधीव पार मिळेल. थोडंसं का होईना मोकळं आभाळ मिळेल. याला एक संदर्भ आहे. गावागावांमध्ये जी हतबलता आली लोकांना, जी जाती व्यवस्थेमुळे किंवा वर्ण व्यवस्थेमुळे जी हतबलता आली, त्या हतबलतेवर पर्याय आणि संविधानानं दिलेल्या संधींचा उपयोग, ते प्लॅटफॉर्म, व्यासपीठ, विचारमंच हे शहरांमध्ये लोकांना उपलब्ध झालं जगण्यासाठी. हा एक संदर्भ या स्थलांतराला आहे. म्हणून म्हटलंय विसाव्याला
विसाव्याला टेकायला बांधीव पार मिळेल, थोडंसं का होईना मोकळं आभाळ मिळेल. हे आभाळ संविधानानं पुरवलेलं आहे. इट इज प्रोव्हाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. झाडं धावतच राहिली, झाडं धावतच राहिली, शहरं भरत राहिली. झाडांबरोबर धावली रोपटी, पारंब्या, धावल्या अवघ्या राया, पाखरांचे थवे, खोप्यातील पिलं आणि त्यांच्या आया. सगळा लवाजमा चालत राहिला, सगळा लवाजमा चालत राहिला. चिकटून आलेली माती झाडत शहरात मान्य केलं झाडांनी, शहरात मान्य केलं झाडांनी. सुंदर सुंदर आकारांसाठी स्वतःला कातरून घेणं, पाहिजे तेव्हा पाहिजे तिथली फांदी छाटू देणं, उंचीनुसार, घेरानुसार, पाना फुलांच्या बहरानुसार दिलेल्या ओळीत बसण्यासाठी पत्करला लागेल तो आटापिटा, लागेल तो आटापिटा. पाखरांसाठी वेगळी व्यवस्था, खोपी घरटी म्हणजे नुसता गळाटा. डांबरातून, सिमेंटच्या कुंपणातून स्वतःला कोंडून घेणं, धुरात पानापानातनं गुदमरणं, पारंब्यांची ताटातूट होणं, सगळं मान्य केलं, सगळं मान्य केलं. अगदी मुळांना तारेनं आवळून छोट्या छोट्या कुंड्यात बोनसाय होऊन सजणं ही झाडांना खरंच पर्याय असतो का जगण्यासाठी जागा निवडण्याचा? झाडांना खरंच पर्याय असतो का? Now I am presenting the translation of this poem in English. This translation is made by Dr. Vaibhav Dhamal. He is professor in Bharati Vidyapith, Pune. This poem is a parabolic poem on migration, specifically a painful but inevitable migration from rural area to urban area. Poem's name, Is There Really an Alternative? All our roots self-plucked, uprooting from the fertile soil, which accompanied since birth. Trees rose up and walked from villages to survive on the urban tar streets. The soil was released. The soil was released as roots dragged on tar. The blossom and leaves have fallen. Dry smoke of tar reached to the top from trunk. A sign of so-called development made at the gate of the city. Trees encroached upon the land without invitation. Trees encroached upon the land without invitation. They started to plant themselves in the trench between tar and cement to find a place for survival. There were no place to grow, so branches pushed each other. The roots struggled and began to spread. Now they want to forget the drought and the land cracked, the scary cracks which swallows entire trees. It has a reference of deprived class in rural life, and the opportunity to live is immersed in urban life due to constitutional provisions. It has this reference. Now they want to forget the drought and the land cracked, the scary cracks which swallows entire trees. City will provide at least thin trickle of water and a stony foundation as a support. They might get a clear sky to trees, so trees keep running. So trees kept running. Cities continued to fill. The sapling ran with the trees. Pillar roots ran too, along with the swarms of birds, chicks in the nest and their mothers. They all walked, leaving behind the sticky soil. Trees agreed in the city for trimming themselves for beautiful artificial shapes, according to height, girth, leaves, and flowers to fit in the given row according to the bloom. Here, separate arrangements for birds, but nests are meaningless. Beneath the tar, beneath the cement, to bury oneself, suffocating in smoke. Perpetual separation. Trees accepted everything. Trees accepted everything. Even tying up the roots with wire and becoming bonsai in small pots. Still being decorated too. Do trees really have a choice to choose a place to live? Do
really have a choice. Thank you. Next poem is in Marathi. ही कविता आहे स्त्रीला कुठल्याही अपेक्षेविना सोबत करू पाहणाऱ्या संवेदनशील मित्राबद्दल. जो अलीकडच्या कौटुंबिक व्यवस्था ज्या बदललेल्या आहेत, ज्या सामाजिक कल्चर आणि स्ट्रक्चर बदललेलं आहे, त्याच्यामध्ये जी घुसमट होती, त्या घुसमटीमध्ये सोबत करणारं निरपेक्ष माणूस पण हे या कवितेमध्ये दिसतं. ही कविता मी सादर करते. कवितेचं नाव आहे काय असतं हे सहजीवन वगैरे. हे अगदीच माहीत असतंय तुला की साधा निसटता स्पर्शही कदाचित येणार नाही कधीच वाट्याला. हे माहीत असते तुला. याची ही व्यवस्थित कल्पना असते तुला की दुसरी छबी तरळत असते तिच्या डोळ्यात, आणि हेही दिसत असते डळडळीतपणे की तिचा जीव गुंतलाय उडून गेलेल्या पाखरात. कधी ती डोळे लावून बसते रिकाम्या नभात, कधी ती डोळे लावून बसते रिकाम्या नभात, गप्प गप्प झालेली असते स्वतःशीच चाललेल्या लढ्यात. अशा वेळी तू असतोस अवतीभोवती, अशा वेळी तू असतोस अवतीभोवती, अगदी पाचोळाही वाजणार नाही इतका सहज. मध्यानीच्या उन्हात वाळ्याचा गंध, विरघळावा झुळकेत तसा, कसलाच दावा न करता तिच्यासाठी, तिच्या रूपानं उभ्या जगण्याच्या अवघ्या सौंदर्यासाठी. तसं तर तुझं गाडं लोडणं आहे जगणं, तिचंही जवळपास तसंच जगणं आणि ओढणंही. आणि तशाच रीत्या जागा दोघांच्याही भरलेल्या आयुष्यात, ज्या कशानच भरत नाहीत, भरल्या जात नाहीत. अशा जीव घेण्या खोल फटींमध्ये आपुलकीचा ओलावा भरत राहतोस. तिच्या कधीच न ओघळणाऱ्या डबडबल्या पापण्यांशी टिप कागद बनून उभा राहतोस एक स्माइलिंग इमोजी लिहून. तिनं सोडून दिलेलं असतं काहीही मागणं, तिनं सोडून दिलेलं असतं काहीही मागणं, सोडलेलं असतं असोशीनं आग्रह धरणं. तरीही तिच्या अस्पर्श भुईला जपणं, ती विसरून गेलेल्या तिच्यातल्या प्रगाढ निष्ठेवर बेलपत्रासारखी निष्काम निष्ठा वाहणं. तिच्या वेड्यासारखं जीव गुंतण्यावर जीव ओवाळून टाकणं. तिच्या अकालीरित्या झालेल्या नभात सांजेचे रंग भरणं. तिच्या मुक्या झालेल्या बोटात स्वप्नांचे कुंचले देणं. तिच्या खळाळत्या हसण्याची झळाळी आपल्या चेहऱ्यावर पसरून घेणं. आणि हे सगळं करताना अगदी सहजतेने काळजाचा तुडुंब भरलेला कुंभ तिच्यासाठी सतत बिनशर्त वाहता ठेवणं. उपकार कर्मयोग वगैरे काहीच मानत नाहीस तू, काहीच मानत नाहीस. उपकार कर्मयोग वगैरे काहीच मानत नाहीस तू, तरीही राहून राहून वाटतं कसं कळतं तुला की तिचा जगण्यावरचा विश्वास राखायला प्राणवायू आहे हे तुझं अव्यक्त निशब्द सोबत करणं. कसं कळतं तुला, कसं? I am now presenting translation of this poem. This translation is made by Shri Prakash Kulkarni. This poem is an ode to a lady's close male friend. He is her genuine well-wisher. He cares, he supports, he tries to infuse a happy harmony in her whenever she is low under the pressing of life. He believes in her extraordinary natural strengths and has almost a mad blind faith in her unbeatable capabilities as a humble yet intelligent human being. Poem's name is What is Symbiosis All About? You know, my friend, you know, my friend, you quite know that even a fleeting touch won't come your way. Maybe never ever. You are fully aware of some other face that is glimmering in her eyes. And you can clearly see that her spirit is glued to her cheek that has already flown high and away. And at times she is sitting with her eyes fixated in the long empty space. And yet, thus when she is all silence, battling her own self, you are there around,
just obvious. You are there around, just obvious, as gentle as a noiseless foot on crisp dead leaves, like a vetiver fragrance dispersed in the cool breeze in an afternoon heat. Without any assertion, you are there for her, for the whole beauty of life that she is. Evidently, you have your own baggage. You have your own baggage, some similar load of things, and the pull of life like hers. And the same gaps in completeness, which cannot be made up just by anything. And yet you go on filling her life deep cracks with the warmth of affection. You stand right at her eyelids, donning a smiling emoji as a blotting paper for the tears that well up in her eyes but hardly trickle down. Hardly trickle down. She is given up. She is given up on asking anything for her, on craving, on insisting on anything. And yet to care for her inviolate field, to bestow a bell-patra like consecrated fare on the profound conviction within her, which she has been missing on. To toss your life over her insane involvement, to scatter a saffron twilight on her horizon, gone ultimately bare, to tuck a paintbrush of dreams in her dumb fingers, to have the glitter on her twinkling belly laughter spread all over your face, and all that while to keep flowing for her the ever full to the brim pitcher called heart unconditionally. You don't actually believe in terms like noble deeds and karma yoga. But how? But just how do you know that it is her life gas, her reassured faith in life? To be thus alongside as a mute tacit companion. How do you know, my friend? How do you know? How? Thank you. Now this is my last poem, third poem I am presenting in Marathi and its translation in English. ही कविता माणसांच्या झालेल्या वस्तुकरणाबद्दल आणि माणसांविषयीच्या असंवेदनशीलतेबद्दल बोलते. कवितेचं नाव आहे बाजूला कशी सारायची माणसं. माणसं नसतात केवळ पेपरमधली बातमी. माणसं नसतात केवळ पेपरमधली बातमी, हळूहळू पहिल्या पानावरून आतल्या पानांवर स्थलांतरित होत जाणारी आणि कधीच पुन्हा आठवणीतही न राहणारी माणसं नसतात केवळ पेपरमधली बातमी. एखाद्या लगेच विसरून जाव्या लागणाऱ्या बातमीसारखी माणसं नसतात केवळ न्यूज चॅनलचा हॉट विषय. 4 दिवस चर्चेच्या चरखात गरागरा फिरून चिपाड होऊन जाणारी माणसं नसतात केवळ पेपरमधली बातमी. हे खरं आहे की त्यांच्या लखतर झालेल्या आयुष्याची चिंदी चिंदी ओढून करता येते लांबलचक बातमी आणि चघळताही येते पुढचा खुराक येईस्तोवर. पण हेही लक्षात घ्यायला हवे की लखतरांची रद्दी नाही करता येत आणि सगळून थुंकून टाकावा चोथा तसा फेकताही येत नाही हाडामासाच्या माणसांचा गोळा. ती पसरलेली असतात बातम्यांच्या अक्षरात, जिथे गोठून गेलेली असते चकचकत्या जगाची संवेदना. बसलेली असतात कधी शोभेच्या मखरात, जिथे भावनांचा झालेला असतो चोळामोळा. कधी कुडकुडत असतात वंचनेच्या भुसकटाने लिंपलेल्या खोपटात. कधी रीती होतात दुष्काळात लवणलेल्या घागरीसारखी. कधी थिजून जातात पावसात कुजलेल्या पाचटासारखी. तरी दुगदुगत राहतात मातीखाली दबूनही रुजू पाहणाऱ्या बीजासारखी. मग अशी माणसं कशी बाजूला सारायची बातमीच्या मथळ्यासारखी. कशी बाजूला सारायची बातमीच्या मथळ्यासारखी. Thank you. Now I am presenting translation of this poem. This poem speaks about insensibility towards human life, their sorrows and tendencies.
This is people's genuine towards people's genuine sorrows and their superficial perception by society in general, and about the tendencies of belating, trivializing human lives. Poem's name, how can we just put them aside? People are not just a news. People are not just a news, gradually migrating from front page to inner corners and fading away into dark trenches of oblivion. People are not just a news. They cannot be forgotten just like a shrugging stale news. People are neither a mere breaking news now, nor a mere hot topic. People are not a breaking news nor a mere hot topic that can be churned in the grinder of discussions and turned into the trash after such extortion. People are not a mere news. Yes, it's bitter truth. Yes, it's bitter truth that the long news can be highlighted by stretching the wounds and agonies of their shabby life. And that can be chewed slowly till next prey. But one must be cautious. One must be cautious that lives, though become shabby, cannot be considered as a waste. And how can the human flesh be chewed and thrown away? How? They are spread out in newsletters where the sensation of glittering world is frozen. Sometimes people are said in an ornamental way, where their emotions are torn. Sometimes they remain weeping, buried under the darkness of deprivation. Sometimes people lose life like a spilled vessel in a drought. Sometimes they remain frozen like rotten wood in the rain. However, they remain smoldering like seeds under the soil, waiting to grow again, to grow again. Then how? Then how to move these people aside, move these people aside like a news headline? How can we do this? How can we set them aside like a mere news headline? Thank you. बहुत धन्यवाद मैम for your Thank you. wonderful recitation. Now I going to request Sri Amuda Bharati Ayya will recite his poems in Tamil. Sri Amuda Bharati is a Tamil writer, poet, and artist. He has more than 6 books to his credit. He has honored with the many literary awards, such as Ovia Kavinyar, Haiku Annai, Pavendar Award by the Government of Tamil Nadu, Best Book Prize from Government of Tamil Nadu, Chennai Kamban Kalaga Award, Singapore Shankari Ramanujam Award, etc. Now I request to Sri Amuda Bharati Ayya may recite his poems in Tamil and their translation. வணக்கம். வணக்கம். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். ஒரே பாரதம் நாம் ஒரு தாயின் மக்கள். அனைவருக்கும் வணக்கம். முதலில் தமிழ் கவிதை. தலைப்பு வாழ்வின் ஓரங்கள். ஓரங்கள் என்பவை சீக்கிரம் பாழ்படும் உண்மை ஐயா கொஞ்சம் சிந்தி தனி ஓரத்திலே சென்று குந்தி. வாழ்வின் ஓரங்கள் ஆகிய ஏழைகள் வாழ்க்கையும் ஓட்டாண்டியாயாகி போச்சே, மனம் ஒப்புவதோ இதை சேச்சே. பாதம் நடந்திடும் பாதைகள் அன்னவர் பாய் என்று மாறுதல் நன்றோ. பாதம் நடந்திடும் பாதைகள் அன்னவர் பாய் என்று மாறுதல் நன்றோ. அந்த பாவத்தை மாற்றுவதென்றோ. எந்த வேதத்தில் மானிடர் கேளுற கூறுது வாருங்கள் நாம் அதை எரிப்போம், நல்ல வாழ்வை அனைவருக்கும் கொடுப்போம்.
கல்வி எழுதிட வேண்டிய கைகளும் காசுக்கு ஏந்திடலாமோ? கல்வி எழுதிட வேண்டிய கைகளும் காசுக்கு ஏந்திடலாமோ? அவர் கண்கள் கலங்கிடலாமோ? சிறு புல்லை புசித்திடும் மாடுகள் போல் அவர் பாடுபட்டும் பயன் ஏது? இந்த பஞ்சம் இனி உதவாது. எண்ணெய் தலைக்கில்லை, உண்ண உணவில்லை, எண்ணத்தரம் இல்லை துயரம். அட என்றைக்கு இவர் நிலை உயரும்? இங்கு வெள்ளை கிழித்திடும் வீரங்கள் பேசுவர், வீழ்ந்து கிடக்குது நியாயம், அவர் வீசுவதோ அநியாயம். கந்தல் உடைகளும் நொந்த மனங்களும் காணவும் காணக்கண் கூசும். கந்தல் உடைகளும் நொந்த மனங்களும் காணவும் காணக்கண் கூசும். இதன் காரணம் யாருக்கு சேரும்? வாய்ப்பந்தல் விரித்திடும் பாவி மனிதர்க்கு பாடங்கள் சொல்லுவோம் வாரி, அவர் வேடங்கள் கொள்ளுவோம் வாரி. ஓரங்கள் என்பவை சீக்கிரம் பாட்படும், உண்மையையா கொஞ்சம் சிந்தி, தனி ஓரத்திலே சென்று துந்தி. இதன் ஆங்கில வடிவத்தில் இப்பொழுது கவிதையை தருகிறேன். தி எட்ஜ் ஆஃப் லைஃப். The edge will desolate rapidly. It's a fact, sir. Please think it over. Sitting at the absolute edge, even the lives of the edges. The poor have gone bank. The poor have gone bankruptcies. Alas, whether the mind will accept it, whether will it be good that the feet walking paths would converse as their mats, when the sin will be alerted, which scripture teaches for the destruction of humankind. Come, let us set them on fire and offer good life to all. May the hands that are supposed to write pedagogy stitch or money. May their eyes be turned to dim with tears, just like grass, just like grass grazing cattle. No justice for toilsome. What is the sequel for their toilsome efforts? The famine will not longer be useful. No oil to hair, no food to consume. Of course, myriad griefs and sorrows they have. When will their status be enhanced? People are sky-piercing, boastful about their deeds here. There lied down the justice. They spread injustice. Eyes will dazzle to watch the dead clothes and the broken heart. Who is responsible for this plight? Come along, let us teach the lesson to the sinful man who spreads Burmacidal oven. Come, let us unmask them. The edge will desolate rapidly. It's a fact, sir. Please think it is over. Sitting at the absolute edge. Thank you. Another poem in Tamil.
இந்த கவிதையின் தலைப்பு வாழ்நாள் வளரும் வழி. சென்று சுழலும் இப்பூமி தன்னில் சீவித்திருக்கும் இம்மாந்தர்கள் எல்லாம் நின்று நிலைத்திட வேண்டி பல நீண்ட வயதுகள் வாழ்ந்திட வேண்டி என்ன வகையினில் எல்லாம் இவர் இங்கு முயல்கிறார் எண்ணில் நகைப்பார். தின்னுவர் மாத்திரை சில்லோர் அந்த தெய்வத்தை வேண்டியே சுற்றுவர் பல்லோர். காயகல்பம் சிலர் உண்பார் முன்பு கண்டவை கூறிடும் ஓலை சுவடி ஏவும் பல பரிகாரம் செய்த ஏற்றமும் வாழ்க்கையும் ஏற நினைப்பார். யானொன்று சொல்லுவேன் கொள்வீர், யானொன்று சொல்லுவேன் கொள்வீர், உங்கள் வாழ்நாள் வளர்ந்திட நல்லரும் செய்தி. தேனென்று நித்திடும் கொள்கை மன திண்மையில் சேருங்கள் தூய குறிக்கோள். யானொன்று சொல்லுவேன் கொள்வீர், உங்கள் வாழ்நாள் வளர்ந்திட நல்லரும் செய்தி. தேனென்று நித்திடும் கொள்கை மன திண்மையில் சேருங்கள் தூய குறிக்கோள். நல்ல குறிக்கோள் வகுத்தே எந்த நாடும் வியந்திடும் வண்ணம் தொகுத்தே வெல்லும் வழியில் முயல்வீர், தினம் வேலை புரிந்ததில் ஆழ்ந்திடல் வேண்டும். நல்ல குறிக்கோள் வகுத்தே எந்த நாடும் வியந்திடும் வண்ணம் தொகுத்தே வெல்லும் வழியில் முயல்வீர், தினம் வேலை புரிந்ததில் வாழ்ந்திடல் வேண்டும். கொண்ட குறிக்கோள் முடிக்கும் அந்த கொள்கை நிறைவேறும் நன்னாள் வரைக்கும், கொண்ட குறிக்கோள் முடிக்கும் அந்த கொள்கை நிறைவேறும் நன்னாள் வரைக்கும் உண்டிங்கு வாழ்நாள் உமக்கே. கொண்ட குறிக்கோள் முடிக்கும் அந்த கொள்கை நிறைவேறும் நன்னாள் வரைக்கும் உண்டிங்கு வாழ்நாள் உமக்கே. இந்த உண்மை நிலை கொடும் என் கவியானை. நல்ல குறிக்கோள் வகுப்பீர், எந்த நாளும் வியந்திடும் வண்ணம் தொகுப்பீர். வெல்லும் வழியில் முயல்வீர், உங்கள் வாழ்வுக்கு பின்னாலும் நற்புகழ் வாழும். வாழ்நாள் வளரும் என்னும் அந்த தமிழ் கவிதைக்கு ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு. For the sake of their continuous stay and longevity, all human beings who live on this rotating earth, we will laugh at them if we know as to whatever possible ways they are trying for their existence. Some would constantly consume different types of pills, and some other world travel regularly to worship the Almighty God. Some people would consume longevity drugs, palm leaf manuscript for adopting some remedies, being instructed therein to lead a happy life and its upliftment. Let me disclose a good news for your lifetime. Please listen to me. Have some principles that taste like honey and add in your minds the pure goals. Try to travel on the winning path by adopting some good principles and compiling them in the manner that the country raising its eyebrow and indulge yourself in day-to-day routine. You will certainly have your lifespan until the arrival of a day on which you will have the spirit of accomplishing the adopted principles. I swear on my poetry
that this gospel will prevail. Try to live on that triumphant route, adopting good principles and college them in such a manner that the forthcoming days astonish. Please remember, your reputation will exist even after your demise. Thank you very much. இத்துணை நேரம் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் எனது கவிதைகளை வாசிக்க வாய்ப்பளித்த சாகித்ய அகாதமி நிறுவனத்தாருக்கு மிகுந்த 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 நன்றியும் வணக்கம். இங்கிருந்து ஐயா எதை சொல்லுகிறீர்களா? இந்த ஏற்பாட்டினை எனக்கு ஏற்படுத்தி தந்த சென்னை பகுதி நிறுவன தொடர்பாளர் திரு சந்திரசேகர ராஜு அவர்களுக்கும் மற்றும் எனது கவிதைகளை கேட்டு மகிழ்ந்த அல்லது விமர்சித்த அனைவருக்கும் எனது நன்றியும் வணக்கமும். வாழ்க வணக்கம். நன்றி ஐயா for your wonderful recitation. Now I request to see DJ Kale sir share your views on others recitation in few words. இன்னொரு முறை சொல்லுங்க. Kale sir, this is for Kale sir. DJ Kale sir. Kalender. Hello sir. Sir, kindly share your views others recitation. Poem. No sir, your views on other poets recitations. Their recitations sir. Recitations. Now they're recited under Pal Priyadarshini ma'am, Anjali ma'am, and Amuda Bharati sir. They're recited poems. Your views in few words. Your views. साहित्य अकादमीने मला जी संधी दिली कविता वाचण्याची एक भारत श्रेष्ठ भारत या उपक्रमामध्ये, त्याबद्दल मी साहित्य अकादमीला धन्यवाद देतो. आणि माझ्या कविता आपल्याला आवडल्या असतीलच असे मी मानतो आणि मी आभार मानतो. काळे सर. हा काळे सर, मी बोलू का 1 मिनिट? हा बोला. ते आपल्याला असं विचारतात की इतरांच्या ज्या कविता आहेत आता प्रेझेंट झाल्या त्याच्याबद्दल आपलं मत सांगा. हा विशेषतः अंजली धमाळ यांनी सादर केलेल्या कविता, त्यांच्या जो परिसर आहे त्या परिसर आणि त्यांच्या भावनांचा आणि त्यांच्या एकंदर व्यक्तित्वाचा आणि सभोवतालच्या ज्या त्यांच्या कल्पना आहेत त्या त्यांनी सादर केलेल्या आहेत. त्या खूप चांगल्या आहेत. आणि तमिळ मधल्या ज्या कविता ऐकल्या त्या इंग्रजीमध्ये सादर करून आपल्याला त्यांनी दुसऱ्या भाषेचं आणि एका भाषेच्या संस्कृतीचं दर्शन करून दिलेलं आहे. त्या कविता मला खूप चांगल्या वाटल्या. एक दोन संस्कृतीचं मिलन झाल्यामुळे या कवितांचा असा एक पापुत्रा आपल्याला ऐकायला मिळाला. त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. थँक्यू. I request Srimati Andal Priyadarshini ma'am share your views on the other poets' recitation. It was a happy occasion to listen to all the poets. The poems lead us to only one destination, that is love, compassion, and empathy. Like we have only one sky, this sky only will save all our lives. Though we live in different parts of the country, different parts of the world, what we all need is love and compassion and empathy only.
And there is no other remedy, there is no other substitute for all the pressures and pains and tears and sorrows of the world except this love and compassion. This will end all the wars that is happening. This will end all the poverty that is happening. This will end all the problems that is happening. So we can always say, Ek Bharat, Shreshtha Bharat. We can always duplicate with, or we can always say it in a broader sense, Ek Bhumi, Shreshtha Bhumi, only with love and compassion. This is the lesson, or this is the message I got from all the poems of today. Thank you so much for inviting me for this occasion. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Mrs. Anjali Damal, madam, kindly share your views on other poet appreciation. First of all, I am so thankful. I'm so grateful to have this opportunity to listen all. Because though I'm not getting exact meaning from Tamil words, after when it is translated, I can understand. But when I was listening to Tamil words, it has some rhythm and it has some vibrations of love that touched my heart. And I felt so nice. I felt that D.G. Kale sir is so senior poet, and it is a fatherly figure to me. And I understand that it is not just a meeting ground of languages. It is a meeting ground. It is like a various rivers of languages meeting together, and it become a ocean of Indian love and culture. And I also understand, I also feel that it is like a fabric stitched together of humanity and love. And I like all poets' poems so much, and I'm so thankful to Sahitya Akademi, Mr. Rajuji, and all dignitaries of Sahitya Akademi, and all my brothers and sisters who are listening to us. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request you, Sri Amuda Bharati sir, kindly share your views on other poet recitations. உங்களுடைய கருத்துக்கள் சார், மற்றவங்க கவிதை வாசித்தாங்கல்ல, அதனால உங்க கருத்து என்னன்னா ஒரு 2 வரிகளை தமிழில் வேணாம், ஆங்கிலத்தில் முடிஞ்சா தெரிவிச்சீங்களா, இல்லைன்னா தமிழில் நீங்க தெரிவிக்கலாம். மிகுந்த மகிழ்ச்சி. அனைத்து கவிஞர்களும் அருமையாக பாடினார்கள். அவர்கள் கவிதைகளிலிருந்து ஏன் என்னையும் சேர்த்து எல்லா கவிஞர்களிடத்திலும் இருக்கிறது ஈரம் என்பதை புரிந்து கொள்கிறேன். மனத்தில் ஈரம் இருப்பவர்களிடத்தில் தான் கவிதைகள் வந்து சேரும். அந்த வகையிலே அனைத்து கவிஞர்களும் அருமையாக பாடினார்கள். தாங்களும் உடனிருந்து எங்களை எல்லாம் இணைத்து வைத்தீர்கள். நாங்கள் எங்கெங்கே வாழ்ந்தாலும் கூட நாங்கள் எல்லோரும் அண்ணன் தம்பிகள், அக்கா தம்பிகள், அண்ணன் அக்கா, அம்மா, அப்பா, எல்லாரும் ஓர் இனம், ஒரே மாதிரியான குணம், எல்லோரும் அன்புடையவர்கள் என்பதை எடுத்து கூறுவதாக இந்த கவிதைகள் அமைந்துள்ளன. குறிப்பாக ஆண்டாள் பிரியதர்சினி அவர்கள் கூறினார்கள், எங்கள் வீடு நூல் வீடு என்று சொன்னார்களே, அதுதான் ஒவ்வொருடைய கவிஞர்களுடைய நிலையும். இப்பொழுது நான் அமர்ந்திருக்கிற என்னை சுற்றிலும் இருப்பன யாவும் நூல்கள் தான். அந்த வகையிலே நூல்கள் வகையிலே வருகிற இந்த கவிதைகள் அனைத்தையும் தருகிற சாகித்ய அகாடமிக்கு எங்கள் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து அமைகிறேன். வணக்கம். Thank you, sir. On behalf of Sahitya Academy, who accepted our invitation and participated and recited their poems in wonderfully, as well as their mother tongue and Tamil English translations, I thank you, Sri D.G. Kale sir, Srimati Andal Priyadarshini Amma, Mrs. Anjali Damal ma'am, Sri Amuda Bharati Ayya. I thank for your participation. I also thank you all literary viewers who are all watched this Poets Meet and enjoyed through Sahitya Academy's media channel. All viewers in all over the world continuously watch Sahitya Academy literary events in 24 languages. Thank you, one and all.